Assalamu alaikum class 7th. Hope you're all doing well. Alright, so you know that we are doing the poem. Okay, this is the poem No, and it's written by Thomas Hood. The lecture is section number 5 and the topic is paraphrasings. Okay, today we are going to do the paraphrasings for the poem No. And this is the presentation of the first paraphrasing that we are going to do. Okay, I have taken this first stanza from your book, from your poem. Okay, let's read the first stanza. Stanza number 1. No sun, no moon, no more, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day, no sky, no earthly view. ठीक है. अब we have 5 lines in the first stanza. ठीक है. अब आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट स्टैंजा नंबर 1 कह रहे हैं, यू हैव टू गिव इट विद मार्कर. ब्लू मार्कर से देंगे, ये स्टैंजा आपने मार्कर से लिखना है और विद बिटवीन द पेज में. ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गिव द हेडिंग ऑफ अ रेफरेंस. ठीक है. अब रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, द पोएम नो has been written by the poet Thomas Hood. ठीक है, name of the poem and name of the poet and a little introduction about the poet as well. Now, Thomas Hood was an English poet, author and humorist, best known for poems such as The Bridge of Sighs and The Song of the Shirt. अब ठीक है, as you know that reference में हम क्या करते हैं कि we have two things. ठीक है, हम दो चीज़ों के बारे में बताते हैं रेफरेंस में. नेम ऑफ द पोइट, नेम ऑफ द पोइम एंड एंड लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट. ठीक है, अबाउट द पोइट बताते हैं. सेकेंड हेडिंग इज़ अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बताते हैं कि इंट्रोडक्शन अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोइम. ठीक है, या स्टोरी. अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है हमारे पास पोइम से रिलेटेड. द पोइम नो इज़ अ लिरिक पोइम. ठीक है, इज़ अ लिरिक पोइम कह रहे हैं. इट्स सॉन्ग सेंटरिंग ऑन द फॉग एंड ग्लूम ऑफ ए नवंबर डे इन लंदन. फॉग मीन्स धुंध जो होती है, मिस्ट होती है, एंड ग्लूम एज ग्लूमी डे लाइक दैट. ठीक है, उन्होंने नवंबर डे को क्या किया है, ग्लूमी डे कहा है. ठीक है, उन्होंने नवंबर डे को एक ग्लूमी डे की तरह उन्होंने एसोसिएट किया है बिकॉज इट्स विंटर्स एवरीवेयर एंड नो बडी सोशलाइजिंग आउट देयर इन दैट टाइम. दैट इज़ वाई देयर इज़ बोर्डम. ठीक है. He completed it in 1844. He completed his poem in 1844. The poet has repeated the word no throughout the poem. No is a negative word that has been taken from the word November, as no shows all the negative qualities of the month no plus November. Now can you see I have highlighted some of the words here. जैसे कि I have highlighted the words no here बिकॉज जो और थॉमस हुड का वर्ड भी हाईलाइट किए. थॉमस हुड ने जो पॉइम्स लिखे वो भी हाईलाइट किए. हाईलाइट से मेरा ये है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने हाईलाइट करेंगे तो उसके मार्क्स मिलते हैं, और दूसरा हाईलाइट जब आप करते हैं तो आप मार्कर से हाईलाइट करेंगे. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन डाउन विद द पेन, ब्लू पेन. हाईलाइट जो की हुई चीज़ मैंने वो आप मार्कर से हाईलाइट करोगे. ठीक है. द पोएट जस्टिफाइज इट दैट देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर. अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टैंजा है हमारे पास. In this poem, the poet says that due to heavy fogginess, there is no appearance of the sun or moon. No one can get any clue of the dawn or dusk. Even such a vast sky is not seen. No one can see the earth. In this stanza, the poet tells us that we can not know as to what time of the day it is. Now, this is the explanation of the stanza. Okay, now the poet is telling us about in the poem that there is heavy fogginess. Okay, and due to heavy fogginess, we cannot know as to what time of the day it is. Okay, we cannot even see the appearance of the sun or moon because there is heavy thin thick fog. Okay, and alright, so this is how you are going to do your first stanza. पहले आप लिखेंगे, इसी तरह आपने सेकंड स्टैंजा यहाँ पे लिखना है. ठीक है, इसी तरह आपने सेकंड स्टैंजा लिखना है. उसके बाद आपने उसे हेडिंग देनी है रेफरेंस. फिर आपने कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है. उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन जो होगा वो सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह मैंने अब यहाँ पे पोएम में सिर्फ स्टैंजा लिखा है और मैंने यहाँ सिर्फ पोएम में स्टैंजा लिखा है, ये स्टैंजा है, और यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन है. आपने क्या करना है कि आपको 3 हेडिंग्स देनी है. ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम होगा. आपने रेफरेंस के आके सेम लिख देना है, कॉन्टेक्स्ट के आके भी सेम लिख देना है. ठीक है, जब आप सेकंड स्टैंजा पे जाएंगे सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो होगी वो ये वाली आ जाएगी. ठीक है, बिकॉज स्टैंजा वुड बी द सेकंड वन, राइट. now हमारे पास स्टैंजा क्या है. No distance looking blue, no road, no street, no the other side of the way. Other side of the way means the other side of the road. No end to any row, no indications where the crescents go. ठीक है.
Now, this is the explanation of the poem. Okay? Generally, we see the blueness in the distance, but because of heavy fog and the extremely poor visibility, even the nearest things cannot properly be seen. Not even the road, the other side of the way is visible. The end of the any street is hidden from our eyesight. There is no sign of any series of houses, and we have clear idea about the directions of the road. Okay, so this is the stanza number 2, and